Welcome to TICE TV. Today I have with me Mr. Debajyoti Ray Chaudhuri. He is the Managing Director and CEO of National E-Governance Private Limited. Welcome, sir. So, sir, before I really, begin with the interaction, can you tell me about your journey in the Indian startup ecosystem and in the industry as a whole? Well, National E-Governance Services started around 5 years back. And we consider ourselves a startup because this is an innovative idea. And information utility, what we are as a concept, has no parallel anywhere in the world. But on the other hand, we are also a PSU, a public sector unit. So it's not like a conventional startup. But what we are doing has no parallel anywhere in the world. And as a PSU, it gives us a larger responsibility to also help in nation building. So what we are doing, one, is helping business do business better. But we also have a larger objective of financial inclusion. Because today, as we see, we are about to be 4 billion and our ambition is to be 4 trillion and ambition is to be 5 trillion of Honorable Prime Minister. But the reality is that a large segment of a population remains or denied access to basic amenities. Our per capita income is even below some of our neighbors in South Asia. So that is where, as a startup and as a PSU, our responsibility lies as to how we can help in financial inclusion so that the benefits of growth, of economic prosperity, and of course of technology reaches out to the masses. So India can be proud of not only being the largest economies or the fastest growing economies, but also the benefits of this prosperity, of this growth, and of this technology, of this digital revolution. It should reach to the masses, to the underprivileged who are deprived today of basic amenities. But I believe that technology will help us reach that. And this is very important because today one of the biggest strengths for us is our population. We are the most populous country in the world, having recently surpassed China. We are the largest and most populous country in the world, and we have to get this demographic dividend. And technology gives us the necessary firepower to achieve it. सर अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें सो a huge population in India is still deprived of a lot of facilities. So how do you think that gap can be filled so that they can actually make benefit of such platforms and they can actually take benefit of a lot of government schemes also which will probably elevate their lifestyle and well-being? देखिए, इन दिस डायरेक्शन हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं. सबसे पहले जो लैंडमार्क इवेंट था वो था आधार. आधार gave us a digital footprint. Every Indian today virtually has an Aadhaar which gives a digital footprint. उसके बाद आया जनधन अकाउंट्स. उससे ये हुआ कि प्रत्येक भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट है. और जो तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप था वो मोबाइल. आपको याद है करीबन 10 साल बाद हमारे डेटा रेट्स काफ़ी कम हो गए. इनफैक्ट टुडे हमारे जो डेटा रेट्स है वो विश्व में सबसे लोएस्ट है. तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं हम जैम. ये जैम है एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन. फर्स्ट स्टेप क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? कि हर भारतीय को एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. और ये जैम की वजह से हर भारतीय को एक बैंक अकाउंट आ गया. आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस है वो विश्व की एक रिकॉर्ड कायम कर रही है. एवरी मंथ एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है. बट हमें याद रखना होगा कि ये जैम नहीं होता तो ये रिकॉर्ड संभव नहीं हो पाता. बट ये एक फर्स्ट स्टेप. जैम के थ्रू हम डीबीटी हम दे रहे हैं. और रिमेंबर कोविड के समय जब बहुत काफ़ी लोगों की इनकम डिस्टर्ब हो गई थी,
तो गवर्नमेंट ने डीबीटी के थ्रू काफ़ी लोगों को राहत पहुंचाई. बट दिस इज नॉट इनफ. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड स्टेप इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इज टू हाउ टू हेल्प द पुअर बिल्ड एक एसेट. एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि सड़क में जो रेडी वाला है, वो उसका जो पुश कार्ट वेंडर, तो उसका जो भी सरप्लस है वो रेडी के हायरिंग चार्जेस में चली जाती है. बट अगर उनको एक छोटा सा लोन देके रेडी अपना कर सकता है तो उसका उसका काफ़ी सरप्लस बनेगा. उसके पास काफ़ी रकम अपने खुद के लिविंग के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एमिनिटीज काफ़ी एक्सेस में आए. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन का फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया है जब हमने हर भारतीय को बैंक अकाउंट दे दिया है. ये हो चुका है. लेकिन सेकेंड स्टेप है, वो भी हम उस राह में अग्रसर हो चुके हैं. क्यों? बिकॉज हम जो वेरियस अपने सब्सिडी लिंक स्कीम्स के थ्रू हम जो कॉमन स्ट्रीट वेंडर्स है, जो पीएम स्वनिधि हमारा जो स्कीम है गवर्नमेंट का, जो कॉमन स्ट्रीट वेंडर्स है उनको भी हम ऋण दे रहे हैं ताकि वो एक प्रोडक्टिव एसेट्स बिल्ड करे और उस प्रोडक्टिव एसेट्स की करके वो अपनी आमदनी को बढ़ाए. और आमदनी बढ़ने से उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेसिक एमिनिटीज है, वो सब एक्सेस हो पाएगी. और ये इसीलिए हो रहा है, टू कम बैक टू माय ओरिजिनल आर्गुमेंट दैट हाउ दिस जैम हैज फैसिलिटेटेड. ये सभी हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ दिस जैम. तो अभी हम लोग उस स्थिति में है कि हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं. हमारे पास सारा फायर पावर है कि टेक ऑफ हम कर लें. ऑल्सो सर, आपने जैसे नेशनल ई गवर्नेंस की ही अगर मैं बात करूँ, सो इट्स इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट यू आर ऑफरिंग टू द इंडस्ट्री. एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग एवरी नाउ एंड देन. सो हाउ डू यू एंश्योर, लाइक एज एन इनोवेटर, दैट your technology is relevant throughout the times? Yeah, this is a very, very important point. Technology is very, very fast changing. That is the first aspect. Secondly, technology can be helpful, but technology can also be dangerous because you can be subject to cyber security attacks. So, हमारा जो approach हमेशा रहा है कि security of a customer's information is paramount. तो उसके लिए जो भी हमें करना है तो वो हम करते हैं. For us, the most important matter is security of customers' information. और दूसरा, as a PSU, our larger objective is also create a national infrastructure institution. So that infrastructure institution we have built. And other factor in our favor is that our promoters have always been very strong. They have supported us with capital, which has enabled us to build the best infrastructure. And we also keep up to date with latest developments. जैसे हम जैम की बात करें तो हमने तुरंत देखा कि ये जो जैम है इसकी ये एक बहुत अच्छा टूल है. तो हम जैम के थ्रू अपना काफ़ी सारा काम करते हैं. तो हम अपडेटेड रहते हैं, वन, टेक्नोलॉजी की तरफ से कि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हो रही है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, हम लार्जर पिक्चर लेते हैं कि अपने देश में डीपीआई कैसे डेवलप हो रही, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे एक आधार है, आधार एक तो आप बैंक अकाउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हम एक आधार दूसरी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. आधार गिव्स अस अ डिजिटल फुटप्रिंट. इट कैन बी यूज्ड टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स. तो बहुत सारे एक यूज़ है. बट अल्टीमेटली आई कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेटमेंट विच आई हैव स्टेटेड एट वेरियस अदर फोरा, इज दैट कि हमारे पास एक DPI है which is Aadhaar, and we have other things also, DigiLocker. As entrepreneurs, how do we build scale on that? How do we use it? जैसे मैंने कहा कि हम स्ट्रीट वेंडर को लोन देते हैं, स्ट्रीट वेंडर डॉक्यूमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट करते हैं. तो कई बार तो उनको अशिक्षित है, वो साइन नहीं करते, लेकिन उनके पास आधार है. तो आधार से क्या करते हैं, वो बायोमेट्रिक साइन करते हैं, आधार से मोबाइल OTP देते हैं. So that is good as signature. So we have to use technology to solve a problem.
developments. So we have to be aware of what technology developments are happening. And we have also to leverage on what the government is doing at the national level. Because that is the idea. Government with infrastructure create. But as entrepreneurs, we have to see how we can use that infrastructure. And that is very famously called by very learned technologist Nandan Nilekani as population scale. कि हमें स्केल बनाना है और हमारे लिए स्केल सबसे जरूरी है. आई रिपीट दैट वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास पॉपुलेशन को लेवरेज करने का सोल्यूशन है. एंड दैट सोल्यूशन कम्स ओनली थ्रू द डिजिटल मोड. दैट सोल्यूशन ओनली कम्स थ्रू leveraging DPI. So, sir, we have, talked all the positives of technology, but since you are an entrepreneur and you are operating in like technology sector, so do you think that you also face daily challenges with this changing technology? So, if there are challenges, so what are those challenges for you that you face on a daily basis in terms of technology specifically? Yeah, there are always challenges like आपने cyber security की बात पहले के कहा है. दूसरी बात दे अदर चैलेंजेस ऑल्सो, जैसे आधार में हम बायोमेट्रिक फुटप्रिंट करते हैं, लेकिन समटाइम्स बायोमेट्रिक्स चेंज. देन द अदर चैलेंजेस, समटाइम्स आधार इज लिंक टू मोबाइल, बट मोबाइल नंबर आपका चेंज हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा. देन टुडे व्हाइल वी हैव वी हैव 4G 5G नाउ इन मेनी प्लेसेस, but then mobile connectivity is a challenge at many places. So without mobile, we are so much used to, and so much of infrastructure is depending on mobile connectivity. तो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगा तो हमारा जितना भी DPI है वो कुछ भी हम यूज नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर द चैलेंजेस. एंड दूसरी बात है, देयर आर सम अदर चैलेंजेस आल्सो. फॉर एग्जांपल चेंजेस इन लॉ, कुछ लॉ में कुछ चेंजेस आएगी, सो देन वी हैव टू टेक, बट वी सी एज अ चैलेंज बट ऑल्सो एज एन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि सरकार अगर कानून में कुछ चेंज कर रही है वो तो देश के बेनिफिट के लिए कर रही है, और देश के बेनिफिट के लिए, देशवासियों के बेनिफिट के लिए. तो वो चैलेंज है, लेकिन हम उस चैलेंज को हेड ऑन लेते हैं. वो जरूर हमारे लिए चैलेंज रहेगा बिकॉज वी हैव टू चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वी ऑलवेज सी दिस एज अ पॉजिटिव. बिकॉज इफ द गवर्नमेंट इज मेकिंग चेंजेस इन लॉ, देश में कुछ कानून में चेंज कर रही है, वो देशवासियों के बेनिफिट के लिए. तो हमें तो एक लार्जर व्यू लेना चाहिए ताकि वो हमारे लिए चैलेंज अगर हो भी, बट वी स्टिल बिलीव दैट वी शुड टेक दैट चैलेंज हेड ऑन बिकॉज इट्स इन द लार्जर इंटरेस्ट of our country and our people, and we have to take such challenges in our stream because we are a long term player. हम तो देश को एकदम firm foundation में डालना चाहते हैं. तो these short term challenges we will take it in our stride. So, sir, coming to the last thing, one message as an entrepreneur from you to the aspiring entrepreneurs. So one is, and I think this is the only message I'll give. देखिए, नारायण मूर्ति जी ने कहा कि वीक में 70 घंटे काम करने हैं. ये आपको अगर दुखदाई लगता है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के काबिल नहीं है, आप छोड़ दीजिए एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको पैशन होना चाहिए कि वो 70 घंटे भी नहीं लगे आपको 70 घंटे, आपको लगे कि दिन में 24 घंटा कम है. सो दैट इज अ मैसेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क.